वेलकम यू ऑल। आम ऑलरेडी खिलाफत मूवमेंट विषय पढ़ुले एंड आज आम डिस्कशन करवा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, तार कॉज कौन थिला, तार फेल्यूर कहीं और से केते दूर प्रोग्रेस करथिला सब किसी डिस्कशन करया। ठीक अच्छे। So the non-cooperation movement is said to be the first organized national movement against the British rule. Okay, तो हमारे British rule against रे सब first organized वाला movement जोड़ा थिला सेटा होची कोन हमारा non-cooperation movement. Though first it was a lot of importance in the modern Indian history. Okay, the movement formally began on August 1st, 1920. 1920 August 1st रे movement हमारा formally start ही थिला. Gandhi promised that if everything goes right, then India will be free within a year. जदि आम से जहाँ भी गवर्नमेंट थिला जदि ठीक ठाक प्लान वाइज जाऊँगी एग्जीक्यूट होउची देन इंडिया को इंडिपेंडेंस पाइबा को गोटे वर्ष भी लगे, गोटे वर्ष भीतर से पाई। बट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, लॉयर्स, पिजन्स, वर्कर्स जॉइन द मूवमेंट। तो देशर जिते भी सब स्टूडेंट्स थिले, लॉयर्स थिले, पिजन्स थिले, वर्कर्स थिले, समस्ते जातीयतावाद स्रोत सामिल होते और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे जॉइन करते। पीपल बॉयकटेड गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज, फॉरेन क्लॉथ्स, ओके एंड कोर्ट्स एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। तो जतक भी आम इंडियन पीपल थे सब बॉयकट कले क्या ना गवर्नमेंट जो सब प्रोडक्ट थिला से कौन ना गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज और फॉरेन क्लॉथ्स बेसी चलता। तो यही सब को मैंने छाड़ी स्वदेशी जिनसर व्यवहार कले। ओके, स्वावलंबी होगा शिखिले। बट apparently the movement became violent. बट ये जो अहिंसात्मक जो आंदोलन था धीरे धीरे कौन ना हिंसात्मक आड़ को गति कला, धीरे धीरे भायोलेंट है। एटलिस्ट इट हैज टू बी विथड्रॉन। ओके, तो एमती गोटे परिस्थिति आसला जो कि विथड्रॉ हो लगे और इट इज अ फेल्यूर। देन सर्कमस्टेंसेस कौन था जोटा जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट है माने तार कॉजेस आम देखिए। ओके, डिसोल्यूशन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। तो ब्रिटिश कौन कला ना किछिटा प्रॉमिस कला कि इंडिया को और बदल कौन कला ना इंडिया वेल्थ, इंडिया मैन पावर, इंडिया पीपल मानकर हेल्प नेला। बट इन रिटर्न से कौन कला ना किछि भी कलानी। ओके, इम्पोजिशन ऑफ राउलत एक्ट। ओके, से राउलत एक्ट एमती थिला कि माने ब्रिटिश माने मन इच्छा क्या भी अरेस्ट करें, क्या किसी भी पनिश करें। ठीक अच्छे। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज डिस्टर्ब ब्रिटिश ऑफिशियल्स। देन गवर्नर जनरल केम अप विथ एन आइडिया ऑफ रिफॉर्म कम रिप्रेशन। ए न्यू कमिटी फॉर्म्ड। ओके, जोटा कि सिडनी राउलेट फॉर्म करथिले। ट्राई टू पुट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ द लिबर्टी। होल ऑफ द नेशन रोज इन indignation against the government, and like a wildfire there was a wave of an agitation all over the country. Okay, then Jallianwala Bagh incident है। ओके, जोटा कि 13 एप्रिल 1919 होता और सेठी कौन ना 20,000 लोक आमर प्रोटेस्ट करने एकाठी थे। ओके, और तार गोटे सिंगल एंट्रेंस थिला। तो सिंगल एंट्रेंस गेट इन प्रोटेस्ट एरिया जनरल डायर कौन कले ना लाइक तांकर जतक सब लोक थे ऑर्डर थे कि बस तुम्हें फायर कर चलो और बहुत लोक मरीगले से। देन जो खिलाफत मूवमेंट होता कि लाइक माने मुस्लिम्स मानकर होली प्लेसेस नॉन मुस्लिम्स को हाथ को न जाओ से कहला ना डिसमिसल ऑफ खलीफ anger among the Indian Muslims against the British. Gandhi approached Ali brothers, Amr Shaukat Ali and Muhammad Ali. Unity among Hindu Muslims. All the India Khilafat Committee adopted the non-cooperation program of Gandhiji, appealed the Muslim community to join the movement and urged to fight together against the British. The starting of movement देखिए। The movement was launched formally on 1st August 1920. Okay, 1920 के फर्स्ट लॉन्च था। गांधी जी along with Ali brothers जो हमारे खिलाफत मूवमेंट जो मैंने थे। ओके, खिलाफत लीडर्स undertook a nationwide tour during which he addressed hundreds of meetings and met a large number of political workers. In the first month itself, thousands of students left schools. जो स्टूडेंट्स थे से गवर्नमेंट स्कूल छाड़ देले and the colleges and joined the movement. Okay, ये जो movement शामिल है and more than 800 national schools and colleges that had sprung up all over the country.
the boycott of law courts by lawyers was not as much successful as the educational boycott, but it was very dramatic and spectacular. Many leading lawyers of the country like C.R. Das, Chittaranjan Das, Motilal Nehru, M.R. Jaikar, then Vallabhbhai Patel, C. Rajagopalachari, etc. gave up the lucrative practices, and their sacrifice became a source of inspiration for many. Volunteers would go from house to house collecting clothes made of foreign cloth and burnt the clothes together. जो भी foreign cloth थी मैंने कटे जोड़े तो then volunteers would go from house to house collecting clothes made of foreign cloth. जो भी foreign cloth वाला थी सबको इकट्ठे करके जोड़े तो चले. In Assam, tea workers went on a strike. Okay, there was a all-over success in every part. But on 17 November 1921, Prince of Wales visited Bombay. Okay, the day when Prince was to land on Bombay, Gandhi called a nationwide hartal protesting Prince visit. Okay, so तांका Prince visit को protest करे में हड़ताल कले किए ना महात्मा गांधी. However, there was a clashes between who went to Prince welcome meeting and who come back from Gandhi's meeting. Police sacking, a riot happened. Okay, a 3-day long violent activity was going on all over the Bombay. The whole sequence of the event left Gandhi worried about the future of the protest. तो नंबर कौन था ना चोरी चोरा इंसिडेंट जोटा कि पहला 1922 5 February. Okay, a violent outburst took place at Chori Chora in Gorakhpur district of United Province of British India. A large group of protesters participating in a non-cooperation movement clashed with the police, who opened fire. Okay. In reprisal of the demonstrators attacked, the set fire to a police station, killing all of its occupants. The event led to death of 3 civilians and 22 or 23 policemen. Suspension of the movement कौन थिला? Gandhi viewed the चोरी चोरा tragedy as a red signal कहीं ना बहुत लोग मरे थिले. A warning that the atmosphere in the country was too explosive for a mass movement. After this incident, Gandhi himself called up the movement, say movement को cancel कर देले. He decided to retrace his steps to cancel the plans for civil disobedience in Bardoli, to suspend the aggressive part of the non-cooperation campaign, and to shift emphasis to the constructive program and hand spinning, communal unity, abolition of untouchability, etc. ये सब किसी जिनसे से स्टार्ट कले जमती कि निज हाथ रे निज चरखा चलेबा. ओके, आ जो छुआ छुआ भेदभाव ताको दूर करबा ए सब से स्टार्ट कले. द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली कॉल्ड अप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन February 12, 1922. द नेशनल कांग्रेस भी ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देला. Then reasons apart from चोरी चोरा इंसिडेंट को छाड़ कर अलग भी बहुत सारा रीजन्स थे जमते के. तो चोरी चोरा इंसिडेंट हैड मेजर रोल इन द सस्पेंशन, बट इट्स नॉट द ओनली रीजन. अलग भी बहुत रीजन थे जमते के फॉल ऑफ कैलिफ आफ्टर कमल पाशा ओवरथ्रू द कैलिफ फ्रॉम तुर्की. द fight for the caliph weekend, and that was not a issue anymore to fight. There was a difference of thought between Ali brother and Gandhi. Obviously ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଲିଡର ଆସିବେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥଟ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ. ଦ ମୁସଲିମ୍ସ also got divided into Khilafat supporter and Congress supporter. Okay, ଦିଟା ନୂଆ ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଗୋଟେ ଖିଲାଫତ. Unproductive student boycott. The protracted boycott of colleges and schools by students dampened the zeal of the movement. There are no alternative built up till then. The student had no option for to join the government run schools and colleges again. तांका पाखे किसी option भी नथिला. Failure of the program of boycott. Gandhi before the starting of the movement promised that they will get Swaraj within a year if nothing goes wrong. But till 1922 most of the goals were not attained. किसी पूरा ही पाल नहीं था. हमको इंडिपेंडेंस पाए 1947 तक ही गला. Repressive measures taken by the British took repressive measures to stop the movement. They brutally attacked those who retaliated. With the help of Rowlatt, British officials arrested, killed people at their whims. Monicha marile. Judiciary was too well maintained by the British officials.
Okay, hence people started avoiding meetings and rallies in support of the movement. Conclusion कौन थिला ना? The non-cooperation movement of 1920 failed to achieve its immediate goal of establishing Swaraj in India, but this apparent failure must not blind us about the immense impact the movement had on India and its people. Okay, the none of the program fulfilled yet, but it was not a failed movement. Obviously এটা তারা successful ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ତ impact କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା. The movement had its success in many grounds. Indian people could realize that it was through this organization that the goal for Swaraj could be achieved, though it was not achieved at immediate point, but it could be achieved. It united the Indian people को इकट्ठे कला, and the movement failed because the people are not that mature for a complete non-violent movement. Okay, so it हमारा सॉरी गला non-cooperation movement. Okay, so आज ପାଇଁ ଏତିକି. Thank you all.